Hello students, welcome to the maths class of class 2nd. Today we will start chapter number 6, the concept of fractions. In this chapter we discuss about the fractions. Divide a whole into the equal part. Show fractions half, 1/3 and 1/4 on a given shape, that is square and circle. First of all, we understand about the concept of fraction. So, fraction means what? When a thing is divided into the equal part. It means कि हम अगर किसी चीज को equal part में divide करते हैं, so each part is called a fraction of the whole. So, उसका एक जो part है, हर एक part जो है वो represent करता है fraction of the whole. Whole मतलब पूरी चीज के लिए वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है. लुक एट दिस एक्टिविटी गिवन इन योर बुक मैथ्स लैब एक्टिविटी. टेक एन एप्पल. सो आपको एक एप्पल लेना है. आस्क एन एडल्ट टू कट इट इनटू द 2 इक्वल पार्ट. आपको आपके यहाँ जो भी बड़ा है उन्हें कहना है कि इस एप्पल को 2 इक्वल पार्ट में कट करें. ईच पार्ट इज कॉल्ड एज द हाफ. सो ये एप्पल जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है. सो one part, this part represent the half of the whole, and this also represent the half of the whole apple. When you divide something into the 2 equal part, अगर आप किसी को 2 equal part में divide करते हैं, so each part is called a half. तो उसका हर एक part क्या represent करता है? half. Half means 1 out of 2 equal part. 1 out of 2 equal part. ओके, सो इस एक एप्पल के हमने 2 पार्ट किए हैं ना. सो इन 2 पार्ट में से अगर मुझे इसके लिए रिप्रेजेंट करना है, सो 1 ये 1 पार्ट रिप्रेजेंट करता है किसमें से? इन दोनों में से. सो 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट. सो हियर द नंबर ऑन अ टॉप इज द नंबर ऑफ अ पार्ट टेकन एंड नंबर एट द बॉटम represent the number of equal part. So this is the half. Let's solve the exercise number 1. Color half of the each shape. Half means क्या होता है? आधा, है ना. So here is one rectangle and rectangle is divided into the 2 equal parts. So आप इसमें से कोई भी एक पार्ट जो कलर कर सकते हैं. मैंने ये पेंसिल से कलर किया है, बट यू कैन यूज एनी कलर. आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो. Like this. Okay, so this rectangle is divided into the 2 equal part and one part is shaded. आप किसी भी कलर से आप इसको शेड कर सकते हो. You can use any color. Next math activity. Take a strip of paper. आपको ऐसे एक लंबी स्ट्रिप लेनी है पेपर की. Try to cut it into the 3 equal part. आपको उसको 3 equal parts में डिवाइड करना है, कट करना है. देखो यहाँ पे किया है, ये एक पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है. ईच पार्ट इज कॉल्ड एज द 1/3. सो दिस 1 part represent the 1/3. 1 means 1 out of 3 equal parts. 1 out of 3 equal parts. We write 1/3. 1 out of 3 equal parts. So number on the top represent number of part taken and number at the bottom represent number of equal part. Let's do the exercise number 2. Look at this shape. Write down in the box what part has been shaded. The first one is done for you. So यहाँ पे कुछ figures है. So we have to write fraction for this figure. In each figure, one part is shaded. So let's do this. Here this rectangle is divided into the 2 equal part and one part is shaded. So we write 1 out of 2 equal part. 1 out of 2 equal part. Here 3 parts, 3 equal parts are given and one part is shaded. So write 1 out of 3. In this circle, one part is shaded out of 3 equal parts. So 1/3.
In this triangle, there are the two total number of parts, and out of this, one is shaded. So write 1 by 2. So in this way, we solve exercise number quarter or 1/4. So here, this cake has been divided into the 4 equal parts. So इस केक को 4 equal parts में डिवाइड किया गया है. वासु टेक 1 part. वासु ने कितने पार्ट लिए 4 में से 1. So वासु टेक 1 out of the 4 equal parts. He has taken quarter of a cake. Okay? अगर 4 पार्ट में से एक पार्ट को देखा जाए, so that part is called as the quarter. हम उसे quarter बोलते हैं. Okay, when you divide something into the 4 equal part, each part is called as the quarter or 1/4. अगर हम किसी चीज को 4 equal parts में डिवाइड करते हैं, so each part represent quarter और 1/4. इसे 1/4 भी कहा जाता है. क्वार्टर और 1/4 मीन्स 1 out of 4 equal part. क्वार्टर या 1/4 का मतलब होता है 1 out of 4 equal part. So the number on the top represent the number of part taken, and number at the bottom represent the number of equal parts. So this is the quarter or 1/4. Let's solve the exercise number 3. What fraction of each has been shaded? Write the fraction in the box. So यहाँ पे देखो एक rectangle है. So this rectangle is divided into the 4 equal part, and one part is shaded. So we have to write fraction for it. So one part is shaded. So on the top we write 1, and total number of part are 4. That's why we write 4 at the bottom. Here this circle has a total number of 3 parts, 3 equal parts. So one part is shaded. So on top we write 1, and at the bottom we write 3. In this triangle is divided into the 1, 2, 3, 4. 4 equal part, one part is shaded. So write 1/4. In this way we solve this exercise. Fraction. When a whole is divided into the 2 equal part, each part is called as the half. अगर पूरी चीज को 2 equal part में divide किया जाता है, so one part represent the half of the whole part. अगर 3 equal part में divide किया जाता है, 3 equal parts, each part is called as the 1/3. अगर 3 part में divide किया जाता है, so one part represent the 1/3. या 1 out of the 3 equal parts. And अगर 4 part में divide किया जाता है, so each part is called quarter or 1/4. Quarter या 1/4 उसे कहा जाता है. So here we solve exercise 4. What fraction of each has been shaded? So यहाँ पे जो shaded part है उसके लिए आपको fraction लिखना है. So in this figure, one part is shaded out of the 3 equal parts, so we write 1/3. In this circle, one part is shaded out of the 4 equal parts. देखो 1, 2, 3, 4. So we write 1/4. In this square, there are the 4 equal parts, and out of this, one is shaded. So write 1/4. So in this way we solve exercise number 4. Exercise number 5. This is the last exercise of this chapter. Shade to show the fraction written below each figure. So here this rectangle is divided into the 4 equal part, and we have to show the fraction 1/4. 1/4 means 1 out of 4. So we have to color one part out of this 4 part. आप कोई भी एक पार्ट कलर कर सकते हो. You can use color also. In this circle we have to color half. Means कोई भी एक पार्ट आपको कलर करना है. आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हो. You can do like this. देखो यहाँ पे हाफ रिप्रेजेंट करना सा था. So we colored one part. Here 1/4. So one box is colored with the green color. You can use any color.
to shed this. So here our chapter number 6 is over. Thank you.